तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप अपने सीयूटी की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डे 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, हो सकता है इसके 2 पार्ट भी हों। तो सबसे पहले आपको बता दूं आपका इस यूनिट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डे 1 के वीडियो में आपको मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग बता दिया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, concepts of GDP, GNP, NDP, NNP, both at factor cost and market price, then measurement of national income, plus तीनों के तीनों इसमें मेथड्स आपके हैं। तो ये है आपका सिलेबस। अब इसके लिए बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको। सो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो नाउ। लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, in each and every economy we have 4 main sectors, and they are: first one is household sector, second one is firms, third government sector, and fourth rest of the world. So if we consider only these 3 sectors, this is called as closed economy. And if we add rest of the world, then it is known as open economy. So these are the 4 main sectors of an economy. In these sectors, what are the main activities of the economy? So the activities, each and every economy has main 3 phases of the economy or the activities. The first phase is considered as production phase. First phase is production phase. Second one is income phase. And the third one is expenditure. These are the 3 phases of an economy. Now, plus you also must know that this phase is also known as generation of income. Generation of income. So when we produce any type of goods or service, then income is generated. So when income is generated, then we will use that income for our consumption or investment purpose. So this is called as distribution of income. This is called as distribution of income. So when we distribute income, so finally it is expenditure. So it is called as disposition. Disposition of income. So these are the 3 phases of an economy. So this is also runs into a circular flow. First of all, there is the production. So when we produce any goods or service, we receive income. And if we receive that income, we spend that on consumption. That is called as expenditure. Expenditure on consumption, either on investment. So further production also generated. So this flow continues. These are the 3 basic activities in an economy. So this is the first concept you should know, and on the basis of this there may be any question in your CUET exam. So I will also practice that. Now the students, next concept you must know: difference between final goods and
intermediate goods. So final goods. Final goods are meant for final consumption, either by consumer or by firms. So point to be noted that final goods can be used by both consumers as well as producers. On the contrary, intermediate goods are as known as raw materials, and it is always used by producer and it is for resale purpose. So in this transformation, goods are transformed in final goods. Sorry, goods are not transferred for final goods. These are used as it has made finally. And in it, goods are transformed into another goods. These are included in national income. These are not included in national income. You can also put any of the examples for intermediate as well as final goods. So point to be noted that any goods can be both intermediate as well as final. It depends who is using that and for what purpose. Suppose a sweet maker bought milk for his shop, then it is intermediate. On the contrary, if any household bought milk for her home, it is called as final goods. So milk can be both final as well as intermediate, it depending on who is using that. So you can also put many examples. So final goods like pen, shirt, कार. अब आगे आपको याद रखना है यूज्ड बाय कंज्यूमर as well as producer. So this can be used by both. So consumer as well as producer. And intermediate goods, suppose any of the goods like seeds, fertilizer, used by farmer. So these are intermediate as well as final goods. Now the students' next question is, what is circular flow of income? So it refers to unending flow, unending, that is not going to be complete, of activities just like production, income, and expenditure involving different sectors of the economy like household, firms, government, as well as rest of the flow income in the two sector economy is one sector household sector, other one is firm sector. So conclusion is that the flow of income first goes from firms to household in form of factor payments and then comes back from households to firms in form of consumption expenditure. So you can pause it and also read it later if you want. So this is circular flow of income. Now this circular flow of income is of two types. This is of two types circular flow of income. One is real flow and another one is money flow, or this is also known as nominal flow. And this is also known as monetary flow. So what is the basic difference in these two? It does not involve monetary components. That means money is not used in real flow and it involves monetary components. Factor services from household to firms. In this, factor services runs from household to
फर्म्स, दैट मीन्स हाउस होल्ड से फर्म की ओर आपके पास फैक्टर सर्विसेज जाते हैं, इसमें फैक्टर पेमेंट जाती है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, and goods and services from firms to household, and here consumption expenditure from household to firms. आपने 12th क्लास में इसको बारे में अच्छे से पढ़ा होगा. Now question, what is leakages and injection? So leakages, that money withdrawn from the flow of income. किस किस चीज से मनी विड्रॉ होता है? तो मनी विड्रॉ होता है बेटे आपके टैक्सेस से, आप मनी विड्रॉ होता है आपके पास सेविंग से, एंड इंपोर्ट. These are the three terms of leakages in a circular flow of income. And injection terms, जिससे मनी आपका ऐड होता है फ्लो में. तो ऊपर के टर्म्स को उल्टा कर दीजिए, गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो क्या कर दी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार उसको स्पेंड करे, खर्च करे, खर्च करे टू कंस्ट्रक्ट फ्लाईओवर्स, टू कंस्ट्रक्ट स्कूल्स एंड एक्सेट्रा. सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करा दीजिए, एंड इंपोर्ट से एक्सपोर्ट कर दीजिए. These are known as injections of the economy. So this is called leakages as well as injection. Now the next difference is flow and stock. So flow is measured in a particular period of time, over a period of time, from, like say you can say from 1st April to 31st March. पूरा एक पीरियड हो गया पूरे होल ईयर का, एंड इट इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक की हम स्टडी करते हैं. फ्लो हैज ए time dimension. It has time dimension. It does not have time dimension. Anything that is used in, these are used in flow, national income as well as stock. So examples, you can say that flow examples has number of birth, number of birth, in a year, national income, these are flow. और नेशनल इनकम को अगर हम नेशनल वेल्थ कर देते हैं, then it is stock concept, because it is measured at a particular point of time. So this is also you have learnt in 12th class. So again revise it for the CUT purpose. Now the next concept, students, you must know difference between factor payment and transfer payment. So factor income is a earned concept. This income is earned and this is not earned. Transaction, you can say that it is a bilateral transaction. It is unilateral. That means it is two-sided and it is one-sided. This is included in national income. This is not included in national income. So factor income like rent, wages, interest, profit, these are examples of factor income or factor payments. On the contrary, as this is not earned income, it is given by one firm to another without any goods and services. So this can be known as old age pension.
अब एनी पर्सन हु गॉट 60 ईयर्स, देन गवर्नमेंट में गिव 1000 2000 एज इज पेंशन, तो आप इसे ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं। स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। So these are the examples of factor income and transfer income. Again, do revise for CUT purpose. Now the next concept is normal residents. So who is considered as the normal residents? So very important concept for your board point of view, that normal residents is a person or organization whose economic interest lies in that country and that person or organization resides in exceeds 1 year. It may be any individual as well as institutions. So any person or organization who lives in a country continuously plus 1 year, 1 साल से ज्यादा रहते हुए उसको हो गया हो और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ ऐड हो गए हों, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ लाई करते हो। बट सिटीजनशिप बाय बर्थ ही किसी को मिल जाती है, बस आपका जन्म उस कंट्री में हो जाए तो आप वहां के सिटीजन बन जाते हैं। बट अगर कोई बाहर का कंट्री है, पर्सन है, और वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट्स बनने के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करना, बस आके 1 साल से ज्यादा रह लो और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे साथ शो कर दो, हमारे आप नॉर्मल रेजिडेंट्स बन जाओगे। बट सिटीजन बनने के लिए अगर कोई फॉरेनर है तो उसको हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। सो बिकॉज any person born in India, he acquires automatic citizenship of India. So अगर आपका जन्म इंडिया में हो गया है तो आप इंडिया के सिटीजन ऑलरेडी बन गए। A person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen. So अभी कुछ समय पहले एक अदनान सामी पाकिस्तान के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और वो अब इंडिया के सिटीजन बन गए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अब कोई पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड सिटीजन, तो दोनों के दोनों, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एट द सेम टाइम ए रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिटीजन कहीं और का व्यक्ति हमारा रेजिडेंस नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉर्मल रेजिडेंट्स एज वेल एज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब देखिए एग्जांपल मैंने इसमें दे रखा है। नाउ तो लिसन केयरफुली दैट following are the examples of individuals staying in a country but are not residents. हमारे ये रेजिडेंट्स नहीं हो सकते। फॉरेन स्टूडेंट्स, चाहिए 1 साल से ज्यादा क्यों ना रह रहा हूं। पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, crew members of ship aircraft of foreign country, and bureaucrats, politicians of foreign countries. These are not the normal residents of India, in spite they are living in India more than 1 year, because their economic interest does not lie with our country. Now the next concept is जीडीपी डिफ्लेटर। तो बेटे जीडीपी डिफ्लेटर आपको याद रखना है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी into 100. So GDP deflator is also known as price index. So this is also known as प्राइस इंडेक्स। तो अब आप इसको किसी को भी किसी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है
तो आप ला सकते हैं, रियल जीडीपी है तो ला सकते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, रियल एंड नॉमिनल, इसमें कुछ डिफरेंस भी है, वो आप देख सकते हैं। तो मीनिंग है कि नॉमिनल जीडीपी इज करंट प्राइस पर मेजर्ड करेंगे एंड दिस इज मेजर्ड ऑन कांस्टेंट प्राइस। It affect price as well as quantity by both, and it affected only by the quantity. It is not a good measure of growth of a country, and it is a better measurement for the growth of a country. So this is the difference between nominal as well as real GDP. Now the next concept is very important question, limitations of GDP as an welfare. तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जीडीपी का वेलफेयर का लिमिटेशंस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपकी जीडीपी राइज होती है, बट वेलफेयर डज नॉट राइज। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों साथ साथ चले, जिसमें आपके पास पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सो इफ there is a distribution of GDP, if there is a equal distribution, if there is a equal distribution, then GDP increase as well as welfare will also increase. And if there is an unequal distribution, then GDP increase but welfare may not increase, even it may decrease, because some people may have earned more money than other. So this is the distribution point. Like suppose rich and poor gap students है, तो इसके बेस पर आप इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। सो इट इज ऑल्सो अगेन क्या करके आपका जीडीपी बढ़ा है। तो अगर आपने राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, अब डिफेंस गुड्स प्रोडक्शन करने से हो सकता है आपका जीडीपी तो राइज हो गया, बट लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा इससे, क्योंकि लोगों को पर्सनल कोई बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, हमारी कंट्री में काफी चीजें ऐसी होती हैं जो मनी में नहीं हम मेजर करते हैं, बार्टर सिस्टम पे हम बेस करते हैं। तो अगर काफी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं तो उससे भी आपके पास जीडीपी नहीं बढ़ेगी, बट लोगों का वेलफेयर होता है, बिकॉज दे डू ट्रांजैक्ट ई विद ईच अदर। एक्सटर्नलिटीज बेटे पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो अगर आपका जीडीपी राइज हुआ है किसी ऐसी काम को करने से जिससे एनवायरमेंट को बेटरमेंट मिलता है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। लेकिन अगर पॉल्यूशन क्रिएट करके आप जीडीपी को राइज करते हैं तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। इवन दो जीडीपी इंक्रीजेस बट पीपल्स वेलफेयर मे नॉट बी इंक्रीज। नेक्स्ट, हु इज व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बेटे डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो आप देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में ये चार चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले है डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपके कंट्री की आर्मी किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, चाहे हम उसे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो हमारी आर्मी। अभी मालदीव से हमारा कुछ इश्यू चल रहा है, हमारी आर्मी वहां पर रहती है। हमारी आर्मी भूटान के पास भी है, नेपाल बॉर्डर में भी रहती है। तो ये आर्मी हमारी जहां होगी वहां की हमारी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा है आपके पास एम्बेसीज। अगर इंडियन एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, दिस इज ऑल्सो इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट। नेक्स्ट, समुद्र में अगर हमने कोई ऑयल रिफाइनरी लगा रखी है कहीं भी हो, वो जिस कंट्री की है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाता है। चाहे ऑयल रिफाइनरी हो या हमारा कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई शिप हो,
फिशिंग वेसल हो, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, दे लुक एट दिस, वाटर टेरिटोरियल वाटर्स। तो बेटे ये जो आप देख रहे हैं, दिस एरिया जो है जहां हमारा इंडिया ही खत्म हो गया, ये है हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री है। उसके बाद ये जो एरिया है, कुछ हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स। तो यहां अंडमान निकोबार है आपके पास, ये हमारा पूरा एरिया हमारा माना जाएगा, इधर ये पूरा एरिया हमारा है। तो इससे बाहर अगर हम निकलते हैं तो ये बन जाएगा नो मैंस लैंड। तो दिस इज नो मैंस लैंड, और ये इंडिया का पार्ट है, ये वाटर टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है। तो ये हमारे हैं चार, एक पॉइंट एयर इंडिया मैंने बता दिया। तो ये हमारे पांच हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होने बाद। क्या एक्सक्लूड क्या करता है? तो बेटे अगर इंडिया में किसी और कंट्री की एम्बेसी है, अब आप देखिए इंडिया है, इंडिया में यहां पर आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, तो दिस इज नॉट इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी तरह से अगर किसी और कंट्री के बैंक हमारे यहां पर हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक, अगर हैं बैंक है तो हमारे डोमेस्टिक माने जाएंगे, केवल बैंकों को छोड़कर, अदरवाइज एम्बेसीज हैं, आर्मी है, जिस कंट्री की है उसकी मानी जाती है। इसके बाद आपके पास बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट है, आप सबको डेप्रीशिएशन पता होनी चाहिए। सो डेप्रीशिएशन, इट इज द लॉस in the value of assets due to normal wear and tear, normal wear and tear। अगर प्रोडक्शन करने के दौरान जो छोटी मोटी टूट फूट होती है, एक तो वो आती है, और दूसरा आता है फोरसीन ऑब्सोलेंसेस, फोरसीन ऑब्सोलेंस। ये दो पार्ट डेप्रिसिएशन के आते हैं। तो डेप्रिसिएशन, इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, ऊपर मैंने बता दिया, ये पॉइंट यहां मेंशन कर सकते हैं, एंड इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, किसी भी कैपिटल लॉस वगैरह हो गया किसी कारण, तो ये आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, ये करता है, इसका प्रोविजन रखा जाता है, इसका प्रोविजन नहीं रखा जाता। Then net factor income from abroad. So net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad minus factor income paid to abroad. That means how much income you received from rest of the world and how much you paid to rest of the world. The difference between this is called as net factor income from abroad. So for numerical point of view, you have to know this. Next one is market price and factor cost. You also should know these concepts. So market price and factor cost, indirect taxes. So indirect tax, as a result of imposition of indirect tax, the market price of commodity increases. तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो मार्केट प्राइस राइज हो जाएगा, और सब्सिडीज लगाने से आपका मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे यूज होते हैं? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इस तरह से आप एनआईटी निकालने के लिए यूज करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी वैल्यू मार्केट प्राइस पर है, so if you want to calculate factor cost, then market price minus net indirect taxes, and if you want market price, then factor cost plus net indirect taxes. So this is the conversion of market price to factor cost and factor cost to market price. Now students, here are the three main methods to be calculated national income. The first, you should know the formula for calculating national income by value added method. So first of all, try to calculate value of output. For this
formula is sales to be calculated market price into units sold plus change in stock. Second one, then you will calculate gross value added at market price. Formula is value of output minus intermediate consumption. Third, net value added at factor cost, then gross value added at market price minus depreciation and minus net indirect taxes. Then finally, to calculate national income is known as NNP at FC, and you have calculated net value added at factor cost. So just add net factor income from abroad. So this you will get your national income by value added method. Next one is income method. So students, for income method, you should know that income method NDP at FC or factor income or domestic income. You will gain operating surplus by adding rent, interest, royalty, profit. If profit is not there, then dividend, corporation tax, undistributed profit. Then plus compensation of employees and plus mixed income. By adding these three things, you will get your domestic income. Then for national income, just add NFIA to the domestic income and you will have your national income by income method. And last, expenditure method. So for expenditure, point to be noted, you can get GDP at MP by just adding private, final, consumption, expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export and export minus import. Then national income, GDP at MP minus depreciation plus NFIA and minus NIT. So these are the three methods for your questions. So students, you will have to revise all these three things. Then you should practice questions. For example, suppose I will show you some question for this practice like this one. Suppose, look at this question. In this question says whether these are to be included or not included in national income. So आप इनको वन बाय वन पढ़ें, देखें कि आपके ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं. तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके आंसर्स की प्रैक्टिस करें, whether these are to be included or not included in national income. Likewise, these are the another for practice question. You will have to identify whether these are intermediate expenditure or these are final expenditure. So again, suppose this is question number 2. You can also send the answers of these one and also practice at home of these questions by just taking the screenshot. Likewise, there are more questions for practice. Another 20 questions. Are these part of national income or not? तो कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि whether these to be included in national income or not. और हम आपके इनकी क्वेश्चंस की आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे.
आज डे 2 की क्लास में इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करिए, देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, MCQs as much as you can. Thank you very much.